Good morning to all of you. Dear student, last online lecture we discussed about study of continent South America. Last chapter North America and this chapter South America. There are these two continents. One continent located in northern hemisphere and South America continent located in southern hemisphere. But the smallest part on this continent located in northern hemisphere. Equator passes on the top of the part, northern part in this south continent. Last lecture we discussed introduction parts of South America, the exact location, latitudinal extent and longitudinal extent, boundary lines, the coastline and the important geographical structure on this continent. There are four important physical divisions in South America. First number, the western coastal strip. First number physical division, the western coastal strip. In this continent, size and shape, triangular shape. Suppose this continent, South America, the western side, there is a coastal strip. The boundary line of this continent, the Pacific Ocean located in the western sides of South America. The very biggest boundary line located in the western side. There is a one important physical features. The name of these physical features, the western coastal strip. We already learned in last lecture. First number physical feature, the western coastal strip. Understood? The coastal areas are located. There are number of smooth beaches. The lot of tourist people attract on that particular area. And near about this western coastal strip, there is a very biggest desert in the South America. Name of this desert, Atacama Desert, correct. Sahara Desert located in Africa. Thar Desert located in India. Atacama Desert located in South America. Second number physical feature, the Western Mountain region. South America, second number physical features, the Western Mountain. The mountains form almost a wall along the western coast of South America. This mountain system is called the Andes. Andes are young-fold mountains. The Andes are called young-fold mountain because they have been formed during the recent period of the Earth history. And these mountains run from the Caribbean Sea in the north to the southern tip of South America. And these mountains are formed by three main ranges enclosing the high plateaus. Such plateaus are called the Intermoraine Plateau. Bolivian Plateau is such a plateau. This plateau is among the highest plateau of the world. Lake Titicaca, one of the largest lakes of South America, is situated in this plateau. The western mountain regions. This mountain range located near the western coastal strip and the central lowland. These areas are the very big and young-fold mountain range. The name of this mountain range, Andes Mountain. This Andes Mountain, the modern mountain range. The nowadays the Earth history, the continental drift theory, dividation of the plates means create the new mountains and the continental shape. At that time, examples of Himalaya mountain, same mountain range, Andes mountain and Himalaya mountain, these two mountain range are the young cold mountain. जैसे हमारे भारत में हिमालय है young cold mountain, उसी टाइप का एंडीज माउंटेन है. There are some important three parallel ranges located in this mountain. हमारे हिमालय माउंटेन को भी तीन पैरेलल रेंजेस है, हिमाद्री, Himachal, Shivalik mountain range. Same thing, there are three parallel ranges located in Andes mountain. These parallel ranges are called the Intermoraine Plateau. ये Andes mountain पे जो भी small parallel range है, इनको बोला जाता है Intermoraine Plateau. Name of these parallel ranges, Bolivian Plateau, Intermoraine Plateau, and the Andes mountain. One of the important thing, Lake Titicaca. Lake Titicaca is a world fresh water, the world largest freshwater lake located in South America.
on that particular mountain range, means Andes mountain. And Mount Cotopaxi is the active volcano. आगे आएगा तो Mount Cotopaxi is the world's largest active volcano located in this Andes mountain. Andes have a number of very high peaks. These peaks remain snow covered even though they are situated close to the equator. Mount Aconcagua, the highest peak in the Andes, 6,969 meters high. There are a number of volcano peaks in this mountain system. Some of these volcanoes are the active. One of the active volcanoes is Cotopaxi in the Ecuador. It is the highest active volcano in the world. There are a number of dormant and extinct volcanoes also. This region is prone to volcanic eruption and earthquake. Interior of the earth surface, there are high temperature. हम जितने जितने नीचे जाएंगे उतना उतना टेम्परेचर ज्यादा है. सी लेवल से जितना ऊपर जाएंगे हाइट इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. अर्थ लेवल से क्रॉस से हम जितने ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता है. अंडरग्राउंड में जितने हम नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है. करेक्ट. दिस इज अ साइंटिफिक रूल. Interior of the earth, underground, every 3 meters there is a 1 degree temperature is increasing. मतलब हम जितनी नीचे जाएंगे 3 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा. ऐसा टेम्परेचर है कोर एट द कोर लेवल 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो दिस whole volcano and magma spread in some important location on the earth's surface. These areas are called the active volcano. Mount Cotopaxi is the example of active volcano. The continuously volcanoes run from that particular region. ये माउंटेन पे है, एंडीज माउंटेन पे एक पीक है, वो पीक का नाम है कोटापैक्सी माउंटेन. वहां पे कंटिन्यूसली 24 आवर्स वोल्केनो आता है बाहर अंडरग्राउंड से. वो भी कौन कैसे स्टेज पे, that type volcano spread in the all area. This is a tourism destination. Most of the tourists attract on this Cotopaxi mountain volcanic region, but the distance is most important part because temperature is very high. Tourism destination है, लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा चाहिए. मतलब उतना डिस्टेंस बनाया है. अगर बहुत नजदीक जाएंगे टूरिस्ट पीपल तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगे बॉडी के पार्ट, क्योंकि टेम्परेचर बहुत है. अंडरस्टूड एवरीवन? एंडीज माउंटेन, दिस इज द सेकंड नंबर फिजिकल फीचर, द वेस्टर्न माउंटेन रीजन. एंडीज इज an example of this mountain region. Andes is a young cold mountain and number of active volcanoes located on that particular mountain region. And the top of the portion of this mountain region, there is a ice cap, means glacier. इक्वेटर के नजदीक है माउंट अकोंकागुआ, इक्वेटर के नजदीक है, फिर भी माउंटेन का टॉप वाला जो पार्ट है वहां पे क्या है, बर्फ है, ग्लेशियर है. वन ऑफ द माउंटेन लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. अफ्रीका में तो एक माउंटेन ऐसा है, माउंटेन का नेम है माउंट किलिमांजारो, लोकेटेड एग्जैक्ट इक्वेटर पे, फिर भी टॉप पोर्शन में बर्फ है, ग्लेशियर है. हिमालय माउंटेन, ऑल माउंटेन रेंजेस लाइक माउंट एवरेस्ट, K2, Godwin Austen, Kanchenjunga, Guru Shikhar, Shivalik ranges, every mountain, whole year glaciers are available. पूरे साल भर बर्फ रहता है ऊपर वाला पार्ट. सेम थिंग Andes mountain, top of the part of the every parallel ranges there are glaciers available. Understood? Look at the picture. There is a glacier on the top of the part of Andes mountain range. Next page, third number physical feature, the central plains. The central plains are low plains and are formed by the basin of the rivers Orinoco, Amazon and La Plata. The Amazon rise in the Andes and flow through Brazil.
before falling into the Atlantic Ocean. The length of this river is 6,280 kilometers and it carries the maximum discharge among all the rivers of the world. The central lowlands are the border in the north and narrow in the south. This region can be divided into three main parts. Central plains, same thing. North America, third number physical features, central lowland. South America, third number physical feature, central plains. There are number of rivers started in the western mountain region. Amazon river, the second largest river in the world. First number, Nile river, first largest river. Amazon is the second largest river. But small tributaries and small river like Orinoco, La Plata river, that type river started on Andes mountain. And these all river ends in the southern parts of South America. In the central area, Brazil, Argentina and Brazil, these country located on that central plains, and agriculture development is very good, much more agriculture development in the central zone, central area. These areas are called the agriculture green revolution in South America. ये साउथ अमेरिका का एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है, एग्रीकल्चर बैकबोन. ब्राजील इज एग्रीकल्चर बैकबोन ऑन साउथ अमेरिका. तो पूरे के पूरे ब्राजील को जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का मेन रीजन है अर्जेंटीना एंड ब्राजील. नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट रिलेटेड बिजनेस, मिल्क इंडस्ट्री, गोट फार्म, पोल्ट्री इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस इज वेरी गुड डेवलप्ड on this central plain. They all credit goes to Amazon river, La Plata river and Orinoco river, because water is the main part of the overall development, and these river bring down from the soil particles on the mountains regions and spread on that particular area. So that's why these plains soil is very good, fertile soil for the development of agriculture. अमेजॉन रिवर ने, ला प्लाटा रिवर ने, ओरिनोको रिवर ने ये एंडीज माउंटेन से क्या किया है? एंडीज इज ए फोर माउंटेन. सेम गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एंड इंडस रिवर ने जो काम किया है इंडिया में, सेम थिंग वैसा ही अमेजॉन, ला प्लाटा रिवर ने किया है. एंडीज माउंटेन से सॉइल रिवर अपने पानी के साथ यहाँ पे लेके आए. ये रिवर जो सॉइल के पार्टिकल स्प्रेड हुए और यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई. This is a third number physical division in South America. These plains divided in three types. First number, the Orinoco Valley. Three main parts. First number parts, the Orinoco Valley. The northern parts south of the Guiana Highlands is the Orinoco Valley. This part is also called the Llanos. There is a three important part located in the central plains. First number, Gunas located here means Llanos. Next is Selvas and third number is Pampas. There is a three part in the central plains. साउथ अमेरिका के सेंट्रल प्लेन के तीन पार्ट किए. फर्स्ट नंबर है ओरिनोको वैली. ओरिनोको वैली का जो पार्ट है वो नॉर्दर्न साइड में उनको बोला जाता है Llanos. Second number is the Amazon basin. This part lies in the south of Llanos and is formed by the river Amazon and its tributaries. This area is covered by the equatorial rainforest called the selvas. Selvas is located in the central part of South America. First number Llanos and second number Selvas. These central plains areas created by the Amazon river. These areas is also called the Amazon basin. This Amazon basin is very good for the agriculture development because soil quality is very good in the central area. Third number, the La Plata.
The southern part of the central plain is formed by the La Plata river system. The grassland of this part are called the Pampas. The Pampas grassland located in the topmost, the southern part of the South America. साउथ अमेरिका का सदर्न पार्ट में पंपास है. ये पंपास को ग्रासलैंड भी बोला जाता है. दिस एरिया इज वेरी फेमस in goat farm and sheep farm and cattle rearing. The cattle rearing means milk related product is very developed in the Pampas grassland. This area created by the La Plata river. It means that three important rivers located in South America. First number river is Orinoco River. Orinoco River located in the northern part of South America. This area developed in Orinoco River. Central area, the Amazon River located in the central part and La Plata River located in the southern part. So the central plains divided in three important basins. First number basin, Orinoco Basin. Second number basin, the Amazon Basin. And third number basin, La Plata Basin. Understood? This is the third number physical division. Third number physical division name is the Central Plains. First number, the western coastal strip. Second number, the western mountain. And third number, the central plains. Understood everyone? Okay. Fourth number physical feature, the eastern highlands. The eastern highlands along the Atlantic coast include Guiana Islands and the Brazilian highlands. These are much lower than the Andes. These are older than the Andes and are formed of ancient igneous rocks. Sandstone and lava flows. The streams flowing through these islands form waterfalls, and one of them, Angel Falls, in southeastern part of Venezuela, is the highest waterfall in the world. Dear student, fourth number physical feature or physical division, South America continent, the eastern highlands. There are two highlands in eastern sides and western side. We discuss in the western part. This western side highland is called the Andes mountain, and this fourth number part, eastern highland. Suppose this is a triangular shape, South America continent, triangular shape. The eastern side's one mountain range is called the Eastern Highland, and the western side Andes mountain. This mountain range height lower than Andes mountain. मतलब हाइट में ये ईस्टर्न वाले हाइट में एंडीज माउंटेन से कम है. And this mountain range is old mountain range. Andes mountain range is young old mountain range, and this eastern side mountain range is old mountain range. The plateau region and igneous rock, these mountain range created by earthquake activity, and totally igneous rocks are present on that eastern side mountain range. igneous rock मतलब बहुत टनल रॉक है, बहुत मजबूत रॉक है. वो कैसे डेवलप हुए हैं? जब अर्थक्वेक हुआ, अंडरग्राउंड में वोल्केनो जो है, ये वोल्केनो अर्थ सरफेस पे आ गया. हमारे टोटल एटमॉस्फेयर की वजह से ये वोल्केनो कोल्ड हो गया, और ये वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये प्लेटू और हार्ड रॉक वाले माउंटेन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं. देयर आर फोर फिजिकल डिवीजन इन साउथ अमेरिका. Number 1, the western strip. Number 2, Andes mountain, means the western highland, the western mountain. Number 3, the central plain, and number 4, the eastern highland. There are geomorphologically structured, geographically, or all these South American continent divided in 4 physical division, not 3. 4 physical division: the western strip, the western mountain, the central plains, and the eastern highlands. Understood? Next point, the Amazon basin. Amazon River
Amazon River is the biggest river in this continent. Amazon River starts Andes Mountain, and this river flows from the northern part to the bottom, southern part of whole South America continent. This continent central area, much more agricultural development, industrialization development, transportation facility, fish industry, hydroelectric power, multi-purpose use. This Amazon river water is multi-purpose use. But the Amazon rainforest is very big rainforest. You look at the National Geographical Channel, the Amazon rainforest, there are lot of ecosystem and the biotic factors are available. Wild animal, some water animals are available, and the food chain. There are number of food chains and ecosystem available on the Amazon rainforest. We detail study of life in the Amazon basin. Before learning about the Amazon basin, let us look at the map. Notice that the tropical regions lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south. So it is referred to as the equatorial region. The river Amazon flows through these regions. Notice how it flows from the mountain to the west and reach the Atlantic Ocean to the east. Numerous tributaries join the Amazon River to form the Amazon basin. The river basin drains portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and a small part of Venezuela. Student, Amazon River and their lot of tributaries join from this Amazon River. In total whole central parts of the South America, these areas are very good and evergreen climatic region. बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज प्लांट्स अवेलेबल है क्योंकि पानी अवेलेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशन गुड है, सॉइल की क्वालिटी गुड है. एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट, अर्थ सरफेस, totally Earth, 0 degree equator, Amazon basin located 10 degree north to 10 degree south. ये एरिया के बीच में ही ये अमेज़न बेसिन है. इक्वेटर से रिमेनिंग पार्ट नॉर्दर्न पोल में है और रिमेनिंग पार्ट सदर्न पोल में है. ये सेंट्रल, हमारे अर्थ के सेंट्रल में अमेज़न बेसिन है. एंड यू ऑलरेडी लर्न इन 5th स्टैंडर्ड or divided 3 climatic zone. Correct? Our are divided 3 climatic zone: hot zone, temperate zone, and frigid zone. Same northern hemisphere में वैसे southern hemisphere में. Hot zone, temperate zone, and frigid zone. Amazon rainforest located in hot zone or equatorial zone. इक्वेटर के नजदीक ही है. 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ इक्वेटर एरिया में अमेज़न रेन फॉरेस्ट है. तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कोल्ड होगा. बात करेक्ट ना? इक्वेटर पे टेम्परेचर कोल्ड है ना बेटा? हॉट टेम्परेचर, करेक्ट. सो द हॉट टेम्परेचर, वेरी हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर ऑन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अमेज़न बेसिन. अमेज़न बेसिन हॉट टेम्परेचर की जगह पे वर्ल्ड में है, इसलिए उनको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी बोला गया है. Climatic condition on Amazon basin. As you know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. Both day and nights are almost equally hot and humid. It rains almost every day, that too without much warming. The day temperature are high and very high humidity. At night, the temperature goes down but the humidity remains high. So due to the adverse climatic condition and inaccessibility, it remains one of the thinly populated regions of the South America. Climatic condition. It's very versatile climatic condition in Amazon basin because at the daytime temperature is very high and humidity is high. At the night टेम्परेचर इज लेस बट ह्यूमिडिटी इज कांस्टेंट. मतलब दिन रात गर्मी है. ह्यूमिडिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि वाटर बॉडीज आर लोकेटेड इन द सराउंडिंग रीजन. पानी का गुणधर्म यह है, पानी धीरे धीरे वार्म होता है
और धीरे धीरे ठंडा होता है। जमीन, लैंड क्विकली वार्म होती है और क्विकली ठंडा भी हो जाती है। इसलिए राजस्थान में देखो आप लोग डेजर्ट में एट द डे टाइम इज वेरी हॉट टेम्परेचर एंड एट द नाइट टाइम इज वेरी कोल्ड टेम्परेचर। दिन में बहुत कड़क टेम्परेचर और रात में बहुत ठंडी। वैसा ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नहीं है, बिकॉज दिस रेन फॉरेस्ट अमेज़न बेसिन लोकेटेड नियर द इक्वेटर एंड सराउंडिंग एरिया देयर इज अ बिग वाटर बॉडीज, so that's why water is slowly warm and slowly cold. Temperature is down, is very slowly process. So that's why at night humidity is constant. दिन में गर्मी भी और ह्यूमिडिटी भी, रात में गर्मी नहीं लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी की वैसी. So that's why these regions is very populated, densely populated area. As far as human being, not only human being but the deserts and plants, trees is very populated area. मतलब वहां पे रेस लगी है, फॉरेस्ट की रेस लगी है. मैं ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो मैं तुझसे भी ऊपर जाऊंगा. इसलिए ट्रीज और प्लांट्स की हाइट बहुत बड़ी है. ट्रीज और प्लांट्स की हाइट ये अमेज़न बेसिन में बहुत बड़ी है. यू लुक एट द नेशनल ज्योग्राफी चैनल और यू सर्च यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं अमेज़न बेसिन ट्रीज एंड एवरग्रीन क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन समझ में आई सब लोगों को? अमेज़न बेसिन में क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रेन फॉरेस्ट with high temperature and abundant rainfall. The equatorial region support the luxuriant vegetation called the tropical rainforest. The rainforests of the Amazon basin are called the selvas. The combination of high temperature and high humidity favors growth of all types of plants. These forests are very dense and they are evergreen. There is no distinct seasons for the shedding of leaves. The forests are in fact so thick that the dense roof created by the leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Rest for the trees and the plants. Very good evergreen climatic condition. Solar radiation जमीन पे नहीं आती. At the daytime, the sunlight not reach to earthquake. मतलब जमीन पे सोलर रेडिएशन नहीं आती. दिन में ऐसा लगता है कि वहां पे नाइट है. At the daytime, अगर हम अमेज़न बेसिन में फॉरेस्ट में जाएंगे तो हमें लगता है यहाँ पे नाइट है. तो कितनी मतलब ट्रीज का प्लांटेशन कवर होगा ऊपर. यू कैन इमेजिन. ऐसा लगता है कि वहां पे कोई टेरेस है ऊपर ट्रीज का. क्या ट्रीज है, सनलाइट है, लेकिन सनलाइट को ऊपर ही पैक किया है ट्रीज ने. समझ में आएगा? नीचे छोटे छोटे प्लांट्स नहीं है. छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप ही नहीं होते. जो प्लांट्स की हाइट बड़ी है वही प्लांट जिंदा है. छोटे छोटे प्लांट्स डेथ हो जाते हैं वहां पे, मतलब ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द रेन फॉरेस्ट इज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन. Day and night, every season, rainfall are going on. मतलब वहाँ पे बारिश every season में बारिश होती है. डे में बारिश, नाइट में ही बारिश. टेम्परेचर भी हाई, रेनफॉल भी हाई. Soil quality is very good. So that's why the evergreen area developed on the Amazon basin. टेम्परेचर भी है, बारिश भी है, soil quality भी है, solar radiation भी है. So the overall condition is very good. So that's why forest is very densely populated. Forest की जो trees की जो संख्या है, population है, वो बहुत ज्यादा है. इसीलिए ये एरिया को एवरग्रीन और सेल्वास भी बोला जाता है. एवरग्रीन और सेल्वास. अंडरस्टूड? Only say the tolerant vegetation may grow here. Orchids, the bromeliads grow as plants. The parasites, both animal and bird life is in abundant in this basin. Birds such as toucanas, hummingbirds, bird of the paradise with their brilliantly colored
plumes. Oversized bills for the eating makes them different from birds we commonly see in India. Animals like monkey, sloth and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also there in these jungles. Crocodile, snake, pythons, abundant anaconda, the heaviest snake in the world, is also found here. Besides, the basin is home of thousands of species of insects. Several species of fish, including the flesh-eating, the piranha fish, is also found in the river. This basin is the extraordinarily rich in the variety of life found here. Most of the wild animal, colorful bird, fish and ecosystems available in the Amazon rainforest. ये रेन फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के एनिमल है. एलिफेंट है, राइनासोर है, मंकी है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, कलरफुल बर्ड है एंड वाटर एनिमल भी अवेलेबल है. ये पूरे के पूरे एनिमल अमेजॉन बेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड द होम ऑफ एनिमल. बहुत सारे वाइल्ड एनिमल का ये अमेजॉन जंगल घर है, हाउस है. इसलिए वहां पे अलग अलग वैरायटी, अलग अलग फूड चेन हमें दिखाई देती है. साइंस में आप लोगों ने फूड चेन क्या है आप लोगों को पता है. तो अलग अलग टाइप की फूड चेन अवेलेबल है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फूड एंड मटेरियल अवेलेबल. जो एनिमल को खाने के लिए चाहिए वो सब वहां पे अवेलेबल है. हमारे इंडिया में जो भी कुछ बर्ड, कलरफुल बर्ड दिखाई देते वो पूरे की पूरी बर्ड वहां पे अवेलेबल है अमेजॉन बेसिन में. बट देर इज अ वेरी glad news in last year 2020 1 month totally burned in this Amazon forest. एक month पूरी तरह से ये Amazon forest को आग लग गई थी. एक month तक वो जल रहा था. Amazon में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. पैसिफिक ओशन में इतना पानी अवेलेबल है. एरोप्लेन से उन्होंने वाटर स्प्रेड करने का ट्राई किया फिर भी वो बर्निंग जो थी वो स्टॉप नहीं हुई. ये बर्निंग में जब आग लग गई थी तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल डेथ हो गए. 2020 में ऑस्ट्रेलिया का फॉरेस्ट भी जल के खाक हो गया. वहां पे कांगारू, कुकाबोरा एनिमल खत्म हो गए बहुत सारे. सेम थिंग अमेजॉन फॉरेस्ट में को भी 2020 में बहुत डेंजरस बर्निंग हुआ था. 2020 ह्यूमन बीइंग के लिए भी खतरनाक है बिकॉज कोविड-19 सिचुएशन इज वेरी बैड. मोस्ट ऑफ द पीपल डेथ इन यूरोपियन कंट्रीज. अमेरिका में बहुत सारी डेथ हो गई. सो द वाइल्ड एनिमल, बर्ड, ह्यूमन बीइंग पूरे के पूरे लाइफ के लिए, पूरे के पूरे एनिमल के लिए 2020 में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ. सेम थिंग अमेजॉन फॉरेस्ट. टुडे वी डिस्कस अमेजॉन बेसिन, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एंड टोटल फिजिकल डिविजन्स ऑफ साउथ अमेरिका. अंडरस्टूड? डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. वहां पे ह्यूमन बीइंग जो लोग रहते हैं, पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट एंड देयर कंडीशन ऑफ ओवरऑल द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी. रिमेनिंग पार्ट डिस्कस नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर. थैंक यू. टेक केयर.